And can you guess which of is the most abundant plant pigment in the world? Let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb light of different wavelengths. Of course, you are familiar with the wavelength of the visible spectrum of light as well as Vibgyor, yes? White, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, जिसको हिंदी में बोलते हैं बैंगनी या पीला and इंग्लिश में बोलते हैं Vibgyor. Can you determine the wavelength, which is called the color of light, at which chlorophyll A shows the maximum absorption? Does it show another absorption peak at any other wavelength too? If yes, which one? So now look at figure 13.3b, okay, showing that wavelength at which maximum photosynthesis occurs in plants. Can we see that the wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll A, example in the blue and the red region, also shows higher rate of photosynthesis. Hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. But by looking at figure 13.3c, can you say that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis? So there are three graphs. एक में बोला है graph showing the absorption spectrum of chlorophyll A, B and the carotenoids, and absorbance of light by chloroplast pigments. So chlorophyll A starटिंग में थोड़ा फिर और ज़्यादा फिर बिल्कुल डाउन हो जाता है. chlorophyll B स्टार्टिंग में बढ़ता है फिर पीक पे जाता है, फिर डाउन होता फिर थोड़ा पीक पे और होता है. और कैरोटीनॉइड्स स्टार्टिंग में पीक पे आता है, फिर डाउन होता फिर और पीक पे जाता है. स्टार्टिंग की वेवलेंथ और एंड की वेवलेंथ पे पीक पे जाता है. फिर सेकंड बोल रहा है ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस. अच्छा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय O2 रिलीज. स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा होती है और ज़्यादा जाती है, फिर बहुत कम होती है, बिल्कुल लगभग ना के बराबर जाके फिर वापस उठती है, फिर पीक पे जाती है, लगभग पीक पे जाती है, फिर डाउन हो जाती है बिल्कुल. And the C graph says the graph showing action spectrum of photosynthesis superimposed on absorption spectrum of chlorophyll A. So the black is rate of photosynthesis and the blue और green जो भी कलर है ये है absorption. So light absorption ज़्यादा हो रही है तो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी हो रही है. लाइट एब्जॉर्प्शन कम, फोटोसिंथेसिस कम. फिर से लाइट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा. So these graphs together show that most of the photosynthesis takes place in the blue and red region of the spectrum. So yeah, some photosynthesis does take place at the other wavelength of the visible spectrum. Let us see how this happens. So chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light. Though chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light, other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids
which are called accessory pigments, also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. Indeed, they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photooxidation. What is photooxidation? वो अभी तो इधर कुछ नहीं दिया हुआ है, या तो चैप्टर के आगे दिया होगा, या जब हम लेक्चर पढ़ रहे होंगे इसका तो टीचर आपको बता देगा व्हाट इज फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो मतलब फोटोन, मतलब लाइट की वजह से ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसको फोटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। शायद ऐसा ही फोटो, फोटोन से फोटो ले लिया, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेशन ले लिया, तो फोटो ऑक्सीडेशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन होता है उसको फोटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आई थिंक यही होगा, बाकी टीचर समझाएंगे तब देख लेंगे। व्हाट इज लाइट रिएक्शन? Light reactions over the photochemical phase include light absorption, water splitting, oxygen release, and the formation of high energy chemical intermediates. ATP and NADPH are the high energy chemical intermediates. Several protein complexes, still nothing, sorry. Light reaction over the photochemical phase include light absorption, water splitting, oxygen release, and the formation of high energy chemical intermediates, ATP and NADPH. So all are good. थोड़ी हवा चल रही है तो विंडोज स्टेबल नहीं है, बाकी बेस्ट है। What is light reaction? Light reactions over the photochemical phase include light absorption, water splitting, oxygen release, and the formation of high energy chemical intermediates, ATP and NADPH. Several protein complexes are involved in the process. Several protein complexes are involved in the process. The pigments are organized into two discrete photochemical, which is light harvesting complex LHC within the photosystem 1, PS1, and photosystem 2, which is called PS2. Photosystem 2. What is light reaction? Light reaction over the photochemical phase include light absorption, water splitting, oxygen release, and the formation of high energy chemical intermediates, which is ATP and NADPH. Several protein complexes are involved in this process. The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes, which is called light harvesting complexes, which is called LHC within the photosystem 1, जिसको PS1 बोलते हैं, photosystem 2, which is PS2 बोलते हैं. These are named in the sequence of their discovery. So photosystem 1 और photosystem 2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको डिस्कवर जो है ना वो हिसाब से किया है, मतलब PS1 को पहले डिस्कवर किया है, PS2 को बाद में डिस्कवर किया है. These are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. During the light reaction. Wait a minute. These are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. ज़रूरी नहीं है कि PS1 पहले वर्क करता है, PS2 बाद में वर्क करता है, नहीं. ये तो डिस्कवरी इसकी
पहले PS1 की हुई थी, फिर PS2 की हुई थी, तो नेमिंग दे दी है इसकी PS1 PS2। जबकि हो सकता है कि ये PS2 पहले वर्क करे, PS1 बाद में वर्क करे, या फिर पहले PS1 पहले वर्क करे, PS2 बाद में वर्क करे। ये इसकी डिस्कवरी, दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग दिस लाइट रिएक्शन। So the light harvesting complexes are made up of hundreds of pigment molecules bound to proteins. The light harvesting complex are made up of hundreds of pigment molecules bound to proteins. Each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system, also called antenna बोलते हैं इसको। These pigments helps to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light. The signal chlorophyll A molecule forms signal नहीं है, single है। The single chlorophyll A molecule forms a reaction center. The reaction center is different in both the photosystems. In PS1, the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 700 nanometers. Hence, it is called P700. While in PS2, it has absorption maximum at 680 nanometer, and that's why it is called 680 P680. PS1 में chlorophyll A को P700 बोलते हैं, और PS2 में chlorophyll A को P680 बोलते हैं। Why? Because the reason is ये इसकी जो पीक होती है वो PS1 में 700 नैनोमीटर पे होती है, और PS2 पे 680 नैनोमीटर पे इसकी पीक होती है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। किसकी? कुछ भी लाइट वगैरह जो भी ये एब्जॉर्ब करता है उसको एब्जॉर्ब करने की इसकी पीक होती है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा टॉपिक है ये, देखते हैं। सो फोटॉन्स आए, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, ये रिएक्शन सेंटर है, और ये प्राइम रिएक्शन है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटो सिस्टम सेकेंड, द रिएक्शन सेंटर chlorophyll A absorb 680 nanometer wavelength of red light, causing electron to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus. क्या बोल रहा है? फिर से देखते हैं। In photosystem second, the reaction center chlorophyll A reaction center है, absorb 680 नैनोमीटर, PS2 में 680 पे सबसे ज़्यादा absorb करता है, सही है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट सही है, 680 नैनोमीटर पे रेड लाइट होती है, ये भी सही है। causing electron to become excited and jump into the orbit farther from the atomic nucleus। अच्छा, उसको एनर्जी देता है ताकि उसकी मूवमेंट इंक्रीज हो, उसकी रेंडमनेस इंक्रीज हो, जिसकी वजह से वो अपना ऑर्बिट छोड़कर न्यूक्लियस का जो जितना दूर वाला ऑर्बिट है वहाँ तक चला जाए। These electrons are picked up by an electron acceptor which passes them to electron transport। फिर वो जो दूर आ जाते हैं तो उसको पिक कर लिया जाता है पकड़ के, which passes them to an electron transport system consisting of cytochrome। फिर वो साइटोक्रोमोसोम के एक सिस्टम कंसिस्टिंग होता है, उससे गुजारा जाता है उसको। This movement of electrons is downhill। अब क्या रीजन, क्या मतलब है डाउनहिल एंड अपहिल का? अपहिल एंड डाउनहिल क्या होता है? This movement of electron is downhill in terms of an oxidation reduction or redox potential scale। The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain, but are passed on the pigments of photosystem PS1। Simultaneously, electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive red light of wavelength 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecule
that has a greater redox potential. These electrons then are moved downhill again, this time to a molecule of energy-rich NADP+. The addition of these electrons reduces NADP+ to NADPH+H+. This whole scheme of transfer of electrons, starting from the PS2 uphill to the acceptor, then down the electron transport chain to PS1, excitation of electrons, then transfer to another acceptor, and finally downhill to NADP+, reducing it to NADPH+, H+ is called the Z scheme. Due to its characteristic shape, this shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale. So लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वापस LHC के पास गया, फिर PS से पहले लाइट आई PS2 पे, तो PS2 का जो LHC है उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गई, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर PS2 के LHC PS1 के LHC पे गए, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से PS1 के जो LHC पे गए ना, तो ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ATP की फॉर्मेशन हुई। फिर LHC जो फोटोसिस्टम 1 है उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे गया, फिर वहाँ पे NADP प्लस से उसका क्या हुआ, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन होता है ना, यस, सो ऑक्सीडेशन हो गए NADPH बन गया। सो ये है Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं Z स्कीम। ये जो पूरी स्कीम है इसको Z स्कीम